हेलो स्टूडेंट्स, मैं BL शर्मा मैथ्स डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 6 of exercise 7.2 of chapter 7 coordinate geometry of class 10th NCERT mathematics, and this is question number 6 on your screen. If the points 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find the value of x and y. Before this question, we need some basic knowledge is required. इस क्वेश्चन के लिए हमें कुछ बेसिक नॉलेज की जरूरत होगी, और वो है, फर्स्ट है, हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला पता होना चाहिए. और मिड पॉइंट फॉर्मूला है, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which is the midpoint of the line segment joining the points x1 y1 and x2 y2 is given by x1 plus x2 by 2 and y1 plus y2 by 2. ये तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हुआ, उसको क्वेश्चन के साथ हम डिटेल में और एक्सप्लेन करेंगे. नंबर 2, in 9th class we already have seen that diagonals of a parallelogram bisect each other. इसको भी हम क्वेश्चन के साथ में इस प्रॉपर्टी को भी डिस्कस हम करेंगे. तो देखिए, from this given information, let ABCD is a parallelogram. ये आपका पैरेललोग्राम है, और ये हमने कंसीडर किया यहाँ पे. Let this point is A, this point is B, this point is C, and this point is D. Diagonals of a parallelogram bisect each other. So let diagonals AC and BD of the parallelogram bisect at point P. और मैं इसका कुछ कोऑर्डिनेट बना देता हूं. Let the coordinate of A, B is AB. So I am writing here the coordinate A, B. Okay. And we also know that P is midpoint of, and also P is midpoint of diagonal AC. Also, P is midpoint of the other diagonal BD. हमें पता है कि किसी भी पैरेललोग्राम में पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं आपस में. It means ये AC diagonal and BD diagonal are intersecting at P. It means, इसका मीनिंग ये हुआ कि ये AP and BP CP इक्वल है, और DP और BP इक्वल है. P मिड पॉइंट है, ये P मिड पॉइंट है AC डायगोनल का भी और BD डायगोनल का भी. ये प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. सो वी कैन से दैट P इज मिड पॉइंट ऑफ both the diagonals, और यही प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे काम आने वाली है. देखिएगा नाउ. So using the section formula, the midpoint formula, A is equal to, means x coordinate is this. Taking here first, taking diagonal AC. So coordinate A will be 1 plus x by 2. Yes, and B will be y1 plus y2 by 2. That is 2 plus is 8 by 2. That is
4। ओके, यहां से देखिए ये x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है। अगर मिड पॉइंट किसी कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हो तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली फॉर y कोऑर्डिनेट, दैट इज y कोऑर्डिनेट b, that is 2 plus 6 divided by 2, so that is 4. And now taking the other diagonal, that is now taking the other diagonal, BD. The midpoint A means the x coordinate is A here again. P is the midpoint of BD. P is the midpoint of AC. P AC diagonal का भी midpoint है और P BD diagonal का भी midpoint है। देखिएगा यहाँ पे. So now we are taking the diagonal BD. So x coordinate will be 4 plus 3 divided by 2, that is 7 by 2. And for the y, y1 plus y, so y plus 5 by 2. कैसे देखिए x1 plus x2 divided by 2, x1 plus x2 divided by 2 for the x coordinate, that is 7 by 2. For the y coordinate b, y1 plus y2 divided by 2 means y plus 5 divided by 2. स्टूडेंट यहाँ पे ये ध्यान देने की बात है कि P तो सेम ही पॉइंट है, इट मींस P is the same point, that is why P is the same point, so we can say here P एक ही पॉइंट है, इसलिए हम कह सकते हैं, देखिएगा, therefore that is it first, that is second, and this is third, and that is fourth. From first and third, this is A, this is also A, so 1 plus x divided by 2 is 7 by 2. Add 2 and 2 cancel, so 1 plus x is 7. Therefore, x is equal to minus 6. The x coordinate is minus 6 or plus 6? Sorry, x coordinate is plus 6. Okay. And for the y coordinate, means y के लिए क्या करेंगे? For now from second and fourth. See here, second is B, that is also B. B is equal to 4 this side, and B is equal to y plus 5 by 2. So we can say that y plus 5 by 2, that is equal to 4. So y plus 5 is 4 to the 8, or y is equal to 3. It means the value of x is so the value of x is 6 and the value of y is 3. Answer. So that's all for this question. Therefore, you can write the answer statement here. Therefore x is equal to 6 and y is equal to 3. Answer. Question में यही पूछा था that find out the value of x and y. That's all for this question. Thank you very much.